everyone, welcome back. So today we are going to create green and blue eyeshadow look. So normally I use only one eyeshadow palettes, but today I'm going to use three different eyeshadow palettes only because I couldn't find the shades which I wanted to use. This video is going to be in Hindi and I'll add English subtitles. So without further ado, let's begin. तो आज का जो ये वीडियो है ये हम ग्रीन और ब्लू आई शेडो मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। तो हमेशा मैं एक ही आई शेडो पैलेट से कोई भी लुक क्रिएट करने का ट्राई करती हूँ, पर आज मैं तीन डिफरेंट आई शेडो पैलेट्स यूज करने वाली हूँ। ओनली रीजन कि मुझे सारे शेड्स एक ही में मिले नहीं है। तो फर्स्ट पैलेट हम यूज करेंगे वो स्टेसी मरी कार्निवल पैलेट वॉल्यूम 1 एंड देन कार्निवल एक्सेल प्रो एंड देन Morphe 35M Boss Mood Palette. So without further ado, let's begin. तो मैंने मेरा स्किन प्रेप कर लिया है और मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर लूंगी in case if you want product list. So first shade we are going to use is from Carnival palette, and the shade which we are going to use is Mood. So let's begin. तो अब मैंने जो आउटर कॉर्नर में लगाया है शेड मूड, उसको उसकी एजेस में ब्लेंड करूंगी शेड स्काई। तो जो मैंने सबसे पहला शेड लगाया था वो था मूड, जो डार्क ब्लू शेड है लाइक अ नेवी ब्लू। उसके बाद मैंने लगाया स्काई जो उससे थोड़ा लाइटर शेड है। अब मैं जो थर्ड शेड लगाने वाली हूँ वो मैं सेकंड पैलेट जो कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट है उसमें से यूज करने वाली हूँ। तो वो शेड का नाम है शो बोट, व्हिच इज दिस। तो अब मैं थर्ड ब्लेंड कर रही हूँ, वो है ग्रीन शेड जिसका नाम है शो बोट। तो अब मैं जो फोर्थ शेड लगा रही हूँ उसका नाम है एक्सटेसी, जो मैं आउटर एजेस में लगाऊंगी। तो मैंने कार्निवल पैलेट में से फर्स्ट शेड लगाया था मूड, सेकंड शेड लगाया था स्काई, फिर मैंने थर्ड शेड लगाया था कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट से जो था शो बोट एंड एक्सटेसी। अब मैं जो फिफ्थ शेड लगा रही हूँ एक्चुअली वो जस्ट मुझे ये जो मैंने दो शेड लगाए हैं उसके बीच में एक डार्क ग्रीन सा शेड चाहिए जो मैंने मॉर्फी पैलेट से लिया हुआ है। उसके लिए मैं शेड ये दो शेड मिक्स कर रही हूं मैं। तो जिसका नाम है एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड न्यूड क्यूट। सो अगर आपके पास सेम पैलेट है और आपको यूज करना है तो दैट इज द नेम ऑफ दोस टू शेड्स।
अब मेरा ये जो कंसीलर ब्रश है जिस पे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं है, बस मैं उसी से मेरी आईलिड को क्लियर कर रही हूँ जहाँ मुझे नए शेड्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले मैं इनर कॉर्नर में लगाऊंगी जो कार्निवल पैलेट है उसमें से मोनी। अब मैं उसके बाद लगाने वाली हूँ ब्लू शेड जो है रिचार्ज। और नेक्स्ट टू रिचार्ज मैं लगाने वाली हूँ सेम पैलेट से जिस शेड का नाम है ब्रीजी। तो नाउ मेरे पास ये मेकअप गीक का पिगमेंट है शुगर रश। तो उसको मैं बस ये एक फ्लफी ब्रश जिससे मैंने मोनी शेड लगाया था उसी से मैं, और कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसी को ड्राई मैं अप्लाई करूंगी आईलिड पे। To get some more sparkle. अब मैं एक प्लेन फ्लफी ब्रश है जिसपे कोई प्रोडक्ट नहीं है, उससे मैं बस जो डार्क ब्लू शेड था उसको थोड़ा मर्ज कर रही हूँ। मेरी लोअर लिड पे मेबेलिन का जो जेल लाइनर है वही लगा रही हूँ। तो अब मैं मावाला का आईलाइनर लगा रही हूँ, उसके बाद मस्कारा एंड देन आई कर्ल माय आईलैश एंड फिर मैं यूनिकॉर्न के आईलैश लगाऊंगी। और अब मैं eyelash लगा के I'll list this product in the description box and I'll see you in a minute.
सो दिस इज द फाइनल लुक। मैंने लैशेस अप्लाई कर दिए हैं और ग्रीन एंड ब्लू आईज कॉम्बिनेशन मुझे भी देखना था कैसा लगता है, एंड आई रियली लाइक्ड इट। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ, तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय गाइस।